بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا. Welcome to Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers. Hope all of you are fine. Today we are going to read New Oxford Modern English Book 5 and it is the third edition of this book. This video is about reading and translation of second chapter, The World in a Wall. Let's start reading the lesson. The World in a Wall. दीवार में दुनिया. सबसे पहले है pre-reading. Talk about the title of this unit. What kind of world could there be in a wall? सबसे पहले हमने इसके टाइटल के बारे में बात करनी है कि एक दीवार में किस किस्म की दुनिया हो सकती है. डिस्कस सम आइडियाज़. कुछ आइडियाज़ को डिस्कस करें. इसके बाद है वर्ड्स टू नो. ऐसे अल्फाज जिनको जानना ज़रूरी है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले. हमारा फर्स्ट वर्ड है एक्सपर्ट. अ पर्सन विद स्पेशल नॉलेज. ऐसा शख्स जिसके पास कोई ख़ास इल्म हो, स्किल, कोई महारत हो, और ट्रेनिंग इन समथिंग या किसी चीज़ की ट्रेनिंग हो, यानी कोई ख़ास तरबियत हासिल की हो. बल्किन स्वेलिंग आउटवर्ड्स, स्टिकिंग आउट, कोई भी चीज़ जो बाहर की तरफ निकल रही हो. कॉन्फेटी, small pieces of colored paper traditionally thrown on birthdays and marriage ceremonies. रंगदार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े जिनको किसी भी तकरीब के मौके पर फेंका जाता है. Dawdling, being slow, आहिस्ता होना. Sibling, a brother or sister, किसी बहन या भाई को सिबलिंग कहा जाता है. Infinite, limitless, impossible to measure, ऐसी चीज़ जिसकी कोई हद ना हो, लामहदूद या जिसकी पैमाइश करना नामुमकिन हो. Intricate, extremely detailed and complicated, बहुत मुफस्सिल और पेचीदा. Oblivious, unaware. Unaware mean अनजान. Phobia, an extreme fear of something, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर या खौफ. Predator, an animal that hunts and kills an other for food, एक जानवर जो दूसरे का शिकार करता है और मार देता है ताकि वो उसको अपनी खुराक बना सके. Quashed, rejected और stopped, रिजेक्ट करना यानी रद्द करना या रोक देना. Rapidity, moving or reacting with great speed, बहुत तेज़ी के साथ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना या हरकत करना. Reluctantly, with hesitation, unwillingly, ना चाहते हुए या हिचकिचाहट के साथ. Ancient, belonging to a period of history that is thousands of years in the past, तारीख़ के उस हिस्से से ताल्लुक़ रखना जो माजी में हज़ारों साल पुराना हो. Rotund, large and plump, बड़ा और गोल मटोल. Scuttled, ran with quick hasty steps, जल्दी जल्दी और तेज़ तेज़ कदम उठाकर भागना. This extract is from the autobiography My Family and Other Animals by Gerald Durrell. ये इक़्तिबास जेरल्ड ड्यूरल की समाह उम्री मेरा ख़ानदान और दीगर जानवरों से लिया गया है. Durrell was an expert in studying animals. Durrell जानवरों का मुतालिया करने का माहिर था. When he was 10 years old, जब वो 10 साल का था, Durrell, his older siblings and his mother moved to Corfu in Greece to live with Durrell's grown-up brother. Durrell और उसके बड़े बहन भाई और उसकी अम्मी यूनान में कॉर्फू में ड्यूरल के बड़े भाई लैरी के साथ रहने के लिए चले गए. It was here that Durrell began to collect and keep animals as pets. ये वहाँ की बात है जब ड्यूरल ने जानवरों को पालतू जानवर के तौर पर रखना शुरू किया. The crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me. घर के साथ साथ बाग के चारों तरफ की गिरती हुई दीवार मेरे लिए शिकार का मैदान थी. It was an ancient brick wall that had been plastered over, but now this outer skin was green with moss, bulging and sagging with the damp of many winters. ये ईंटों से बनी एक कदीम दीवार थी जिसको प्लस्तर कर दिया गया था, लेकिन अब इसकी बैरूनी जिल्द काई की वजह से सब्ज़ हो चुकी थी जो बहुत से मौसम सरमा की नमी की वजह से बाहर की तरफ निकली हुई थी. The whole surface was an intricate map of cracks. इसकी पूरी सतह पर दरारों का एक पेचीदा जाल बना हुआ था. Some several inches wide, कई कुछ इंच तक चौड़ी थी. Others as fine as hair, और कुछ बाल की तरह बारीक. Here and there large pieces had dropped off,
and revealed the rows of rose-pink bricks lying beneath. यहाँ वहाँ से कुछ टुकड़े गिर चुके थे, जिसकी वजह से उसके अंदर गुलाबी रंग की ईंटों की एक कतार नज़र आ रही थी. The inhabitants of the wall were a mixed lot. उस दीवार के रिहायशी मिले जुले थे. And they were divided into day and night workers. और उनको दिन और रात के काम करने वालों की सूरत में तकसीम किया गया था. The hunters and the hunted. और शिकार और शिकारी की शक्ल में. At night, the toads and geckos were the hunters. रात के वक्त मेंढक और छिपकलियाँ शिकारी होते. Their prey was the population of stupid, absent-minded crane flies, moths of all shapes and sizes, and rodent beetles hurrying with their night's work. और इनका शिकार होते थे बेवकूफ़ गायब दिमाग क्रेन मक्खियाँ, हर शक्ल और साइज़ के पतंगे और मोटे भंवरे जो अपने रात के काम में बहुत जल्दी कर रहे होते थे. By day, दिन के वक्त, it was difficult to tell the difference between the prey and the predator. शिकारी और शिकार के दरमियान फ़र्क बताना मुश्किल होता था. Everything seemed to feed off everything else. ऐसा लगता था हर चीज़ ही दूसरी चीज़ को खा रही है. The hunting wasps searched out caterpillars and spiders. शिकारी भीड़, सुंडियों और मकड़ियों को ढूंढ रहे होते. The spiders hunted for flies. और मकड़ियाँ मक्खियों का शिकार करती. The dragonflies fed off the spiders and the flies. और काबुल मक्खी मकड़ियों और मक्खियों को खा जाती. And the swift multicolored wall lizards fed off everything. और तेज़ रफ्तार मुख्तलिफ रंगों की दीवार वाली छिपकलियाँ हर चीज़ को खा जाती. But my favorites were the shyest members of the wall community who did not seek any attention. लेकिन मेरे पसंदीदा थे दीवार की बरादरी के सबसे शर्मीले रुकन जो कोई तवज्जो नहीं चाहते थे. They were also the most dangerous. और वही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी थे. You hardly ever saw one unless you looked for it. आपको मुश्किल से ही कोई एक नज़र आता जब तक आप उसकी तलाश ना करते. And yet there must have been several hundred living in the cracks of the wall. जबकि दीवार की दरारों में वो सैकड़ों की तादाद में यकीनन मौजूद थे. If you gently lifted a piece of the loose plaster away from the brick. अगर आप ईंट से पीछे हटे हुए प्लास्टर का एक टुकड़ा आराम से उठाते. There, crouching beneath it, यहाँ वो इसके नीचे झुके हुए मिलते. Would be a little black scorpion an inch long. एक छोटा काला बिच्छू जो 1 इंच तक लंबा हो. Looking as though he were made out of polished chocolate. ऐसा लगता था उसको पॉलिश की गई चॉकलेट से बनाया गया है. They were weird looking things. वो अजीबोगरीब नज़र आने वाली चीज़ें थी. With their flattened oval bodies. चिपकी हुई बेज़वी जिसामत. Their neat crooked legs. उनकी साफ सुथरी मुड़ी हुई टांगें. The enormous crab-like claws. बहुत से केकड़े जैसे पंजे. Bulbous and neatly jointed as armor. सूजे हुए और सफाई से जुड़े हुए जैसे ज़रा बख्तर हो. And the tail like a string of brown beads. और दुम ऐसी जैसे भूरे रंग के मोतियों की एक लड़ी हो. Ending in a sting like a rose thorn. और आखिर में एक डंग लगा हुआ जैसे गुलाब के पौधे का कांटा हो. The scorpion would lie there quite quietly. बिच्छू वहाँ पर काफ़ी खामोशी से रहते. As you examined him only raising his tail. जैसा कि आप उसको अपनी दुम ऊपर करते हुए ही देख सकते थे. As a warning sign, एक खबरदार करने की अलामत के तौर पर. If you breathe too hard on him, अगर आप उसके ऊपर बहुत ज़ोर से सांस लेते. Then one day, फिर एक दिन, I found a fat female scorpion in the wall. मुझे दीवार में एक मोटी सी मादा बिच्छू मिली. Wearing what at first glance appeared to be a pale fawn fur coat. पहली नज़र में देखने पर लगता था कि उसने पीले या बादामी रंग का फर का बना हुआ कोट पहना है. Closer inspection proved that this strange garment was made up of a mass of tiny babies clinging to the mother's back. करीबी मुआयने से ये बात साबित हुई कि इसके ये अजीबोगरीब कपड़े इसके बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी माँ की पीठ के ऊपर चिपके हुए हैं.
I was enraptured by this family. میں اس خاندان میں مگن ہو گیا تھا. And I made up my mind to smuggle them into the house and up to my bedroom. اور میں نے اپنے گھر اور اپنے سونے والے کمرے تک ان کی غیر قانونی درآمد کے لیے اپنا ذہن تیار کر لیا تھا. So that I might keep them, تاکہ میں ان کو رکھ سکوں. And watch them grow up, اور انہیں بڑھتا ہوا دیکھ سکوں. With infinite care, I moved the mother and family into a matchbox. بے انتہا احتیاط سے میں نے ماں اور اس کے خاندان کو ماچس کی ڈبیا میں منتقل کیا. And then hurried to the villa, اور پھر گھر کی طرف بھاگا. It was rather unfortunate that just as I entered the door, lunch was served. جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا بدقسمتی سے کھانا لگ چکا تھا. However, تاہم I placed the matchbox carefully on the mantelpiece in the drawing room. میں نے مہمان خانے میں آتش دان کے اوپر احتیاط سے ماچس کی ڈبیا کو رکھا. And made my way to the dining room, اور کھانا کھانے والے کمرے کی طرف چلا گیا. And joined the family for the meal, اور کھانا کھانے کے لیے خاندان کے ساتھ شامل ہو گیا. Toddling over my food, اپنے کھانے کو آہستگی سے کھاتے ہوئے. Feeding Roger superstitiously under the table, اور میز کے نیچے راجر کو چپکے سے کھانا دیتے ہوئے. And listening to my family arguing, اور اپنے خاندان کو بحث کرتے ہوئے سنتے ہوئے. I completely forgot about my exciting new captures. میں اپنے نئے پرجوش قیدیوں کو بالکل بھول گیا. At last, Larry having finished, آخرکار لیری نے کھانا ختم کیا. Fetched the cigarettes from the drawing room, بیٹھک سے سگریٹ لے کر آیا. And lying back in his chair, he put one in his mouth, اور اپنی کرسی میں پیچھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک اپنے منہ میں رکھا. And picked up the matchbox he had brought, اور ماچس کی ڈبیا اٹھائی جو وہ لے کر آیا تھا. Oblivious that the end of my happy days was about to come, اس بات سے انجان کہ میرے اچھے دنوں کا اختتام ہونے والا ہے. I watched my eldest brother interestedly as still talking loudly. He opened the matchbox. میں اپنے بڑے بھائی کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا جو ابھی تک اونچی آواز میں باتیں کر رہا تھا. اس نے ماچس کی ڈبیا کھولی. Now I insist to this day, میں آج کے دن تک بھی اس بات پر اصرار کرتا ہوں. That the female scorpion meant no harm, یعنی مادہ بچھو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی. She was nervous, وہ پریشان تھی. And a little annoyed, اور کچھ غصہ بھی تھی. At being shut up in a matchbox, ایک ماچس کی ڈبیا میں بند کیے جانے کی وجہ سے. For so long, کافی دیر تک. She seized the first opportunity to escape, اس نے فرار ہونے کا پہلا موقع چھین لیا. She pulled herself out of the box with great rapidity, اس نے بہت تیزی سے اپنے آپ کو ڈبیا سے باہر کھینچ کر نکالا. Her babies clinging on desperately, اس کے بچے اس کے ساتھ شدت سے چپکے ہوئے تھے. And scuttled on to the back of Larry's hand, اور لیری کے ہاتھ کے پچھلی طرف بکھرے ہوئے تھے. They're not quite certain what to do next, وہاں پر غیر یقینی صورتحال میں نہ جانتے ہوئے کہ کیا کرنا ہے. She paused, وہ رکی. Her sting curled up at the ready, اور اس نے اپنے ڈنگ کو بالکل تیار کیا. Larry feeling the movement of her claws, لیری اس کے پنجوں کی حرکت کو محسوس کرتے ہوئے. Glanced down to see what it was, نیچے کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ کیا ہے. And from that moment things got increasingly confused, اور اس لمحے سے چیزیں انتہائی حد تک پریشان کن ہو گئیں. He uttered a roar of fright, اس نے خوف سے ایک چیخ ماری. That brought Roger out from beneath the table, جس کی وجہ سے راجر میز کے نیچے سے باہر نکل آیا. Barking wildly, بہت جنگلی انداز میں بھونکتا ہوا. With a flick of his hand, اپنے ہاتھ کے ایک ہی جھٹکے سے. He sent the unfortunate scorpion flying down the table, اس نے بدقسمت بچھو کو میز سے اڑا کر نیچے پھینک دیا. And she landed midway between Margot and Leslie, وہ مارگو اور لیسلی کے بالکل درمیان میں جا کر گری. Scattering babies like confetti, اپنے بچوں کو اس طرح سے بکھیر کر پھینکتے ہوئے جیسے جشن کے موقع پر کاغذ کی پتیاں پھینکی جاتی ہیں. As she thumped on the cloth, جیسے ہی اس نے کپڑے کو جھٹکا دیا.
And with that, there was a rapid change from peace to chaos. इसके साथ ही वहाँ सुकून से हंगामे की तरफ एक बहुत तेज़ तब्दीली आई. Thoroughly enraged at this treatment, ऐसे रवैये से पूरी तरह से नाराज़ होकर, The creature sped towards Leslie, वो मखलूक लेस्ली की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ी. Her sting quivering with emotion, गुस्से के जज्बात की वजह से उसका टंग कांप रहा था. Leslie leapt to his feet, लेस्ली ने अपने पाँव पर छलांग लगाई. Overturning his chair, अपनी कुर्सी को उलट दिया. And flicked out desperately with his napkin, अपने रुमाल के साथ पूरी शिद्दत से बाहर की तरफ भागा. Sending the scorpion rolling across the cloth towards Margot, बिच्छू को कपड़े के दूसरी तरफ रोल करके मार्गो की तरफ फेंकते हुए. Who promptly let out a scream, जिसने फौरी तौर पर एक ज़ोर की चीख मारी. That any railway engine would have been proud to produce, जैसी चीख कोई भी रेलवे इंजन पैदा करके फ़ख्र महसूस करे. Eek, look out, they are coming, screamed Margot. Eek, Margot चिल्लाया, देखो देखो वो आ रहे हैं. All we need is a book, हमें सिर्फ एक किताब की ज़रूरत है. roared Leslie, लेस्ली ज़ोर से बोली. Don't panic, परेशान मत हो. Hit them with a book, उन्हें एक किताब से ज़रब लगाओ. Mother, completely bewildered by this sudden and rapid change from peace to chaos. अम्मी जो सुकून से इंतशार की तरफ इस तेज़ और अचानक तब्दीली की वजह से बहुत परेशान थी. Put on her glasses, उन्होंने अपना चश्मा लगाया. And peered down the table, और मेज़ के नीचे देखने लगी. To see what was causing the pandemonium, ये देखने के लिए कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से अफरा तफरी फैली हुई है. And at that moment, Margot, in a vain attempt to stop the scorpion's advance, उसी लम्हे मार्गो ने एक बेकार कोशिश की बिच्छू को आगे बढ़ने से रोकने के लिए. Hurled a glass of water at it, उसने उस पर पानी का एक ग्लास में ढेल दिया. The shower of water missed the animal completely, पानी की बौछार से जानवर तो मुकम्मल तौर पर बच गया. But successfully drenched mother, लेकिन अम्मी को कामयाबी से भिगो दिया. Who, not being able to stand cold water, जो ठंडे पानी को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी. Promptly lost her breath, अचानक से उनका तो सांस ही रुक गया. And sat gasping at the end of the table, वो मेज़ के आखिर में हाँफते हुए बैठ गई. Unable to protest even, हत्ता कि एहतजाज करने के काबिल भी ना रही. Get a knife, एक चाकू लाओ. Hit them with a book, उन्हें किताब से मारो. Shouted Larry, लैरी चिल्लाया. That boy will kill the lot of us, ये लड़का हम में से बहुत सौ को मार देगा. Bah, look at the table, bah, मेज़ की तरफ देखो. Knee deep in scorpions, घुटनों तक बिच्छुओं में डूबा हुआ. Kill them, उन्हें मार डालो. Oh no, don't hurt them, oh नहीं, उन्हें नुकसान मत पहुंचाओ. I'll catch them, मैं उन्हें पकड़ लूँगा. I pleaded until eventually backed up by mother, मैं इल्तिजा करता रहा हत्ता कि बिला आखिर अम्मी ने मेरी हिमायत कर दी. Leslie's suggestion that the whole lot be killed was quashed, लेस्ली की सबको मार देने की तजवीज़ को रद्द कर दिया गया. By the time a certain amount of order had been restored, जब तक हुक्म के एक ख़ास हिस्से को बहाल किया जा चुका था, all the baby scorpions had hidden themselves under various plates and bits of cutlery, बिच्छू के तमाम बच्चों ने अपने आप को प्लेटों के नीचे और कटलरी के हिस्सों के नीचे छुपा लिया था. The results of this incident were numerous, इस वाक़ये के कई नताइज थे. While the family still feeling angry and frightened, ख़ानदान जो कि अभी तक डरा हुआ और गुस्से में था, moved to the sitting room, बैठने वाले कमरे की तरफ चला गया. I spent half an hour rounding up the babies, मैंने तकरीबन आधा घंटा बच्चों को इकट्ठा करने में लगाया. Picking them in a teaspoon, उनको एक चाय के चम्मच में उठाते हुए. And returning them to their mother's back, और उनको उनकी माँ की कमर पर छोड़ते हुए. Then I carried them outside on a saucer, और फिर मैं उनको एक तश्तरी पर रखकर बाहर ले आया. And reluctantly released them on the garden wall,
اور ہچکچاتے ہوئے ان کو باغ کی دیوار پر چھوڑ دیا۔ Roger and I went and spent the afternoon on the hillside. میں نے اور راجر نے سپہر کا وقت پہاڑی پر گزارا۔ For I felt it would be wise to allow the family to have a break before seeing them again. کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ خاندان سے دوبارہ ملنے سے پہلے ایک وقفہ لینا ضروری ہے۔ Larry developed a phobia about matchboxes. لیری میں ماچس کی ڈبیا کا خوف بیٹھ گیا۔ But from my point of view، لیکن میرے نقطۂ نظر کے حساب سے، the worst repercussion of the whole affair was that mother decided to try to stop me from exploring the animal world. اس سارے معاملے کا سب سے برا نتیجہ یہ نکلا کہ امی نے مجھے جانوروں کی دنیا کو کھوجنے سے روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ You are running wild again. تم پھر سے جنگلی ہو رہے ہو۔ It is high time you received a little more education. یہ ایک اچھا وقت ہے تمہارے زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے۔ She said, I am getting you a tutor. انہوں نے کہا میں تمہارے لیے ایک استاد کا بندوبست کر رہی ہوں۔ This was the end of this lecture, and if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. If you have any query, comment or suggestion related to my content and mine, you can freely tell me in the comment box below. جیسا کہ میں نے بتایا تھا، اس دفعہ ہم پھر سے کوشچن آنسر کا ایک سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس چیپٹر سے ہمارا کوشچن ہے کہ what was the color of scorpion؟ آپشن اے بلیک، آپشن بی براؤن یا آپشن سی گرے۔ اس کوشچن کا آنسر آپ نے 14 اپریل 2022 سے پہلے کمنٹ باکس میں بتانا ہے، اپنے اور اپنی سٹی کے نام کے ساتھ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔